everyone, welcome back to Flamboyance, and today guys we are going to do a new look. So I'm not going to disclose the look and let's see how it turns out to be, and let me know how you like this particular video. For this particular video, let's get started. Alright guys, मैंने eyes conceal कर ली हैं as you can see. So now guys I am picking this particular palette और इसमें से मैं एक green सा shade उठा रही हूँ on this fluffy brush and I am just making this wave, as you can see. Picking up some more shade and just Alright guys, I'm just using a mirror to see perfectly how it's turning out to be. Alright, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और अब मैं ये डार्क ग्रीन सा जो शेड है ये उठा रही हूँ यहाँ से एंड इसी ब्रश पे डस्टिंग ऑफ द एक्सेस एंड जहाँ जहाँ हमने किया था नीचे उसको सेम पैटर्न में उसी तरीके से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. और राइट गाइज, मैंने ये दोनों आइज़ आप देख सकते हैं एक वेव की तरीके से मैंने दोनों आइज़ लाइट एंड ग्रीन डार्क ग्रीन कलर से मैंने फिल कर लिया. नाउ विद दिस हेल्प ऑफ अ कंसीलर आई एम गोइंग टू डू अ कट क्रीज. दिस वे एंड मैं इसको पूरा अभी फिल करने वाली हूँ. Alright guys, ये almost सूख चुका है and now I'm going to take this Sephora miniature palette. Guys, this is the original one and इसी तरीके से एक Sephora ने भी निकाला था. However, this is from SFR. ये इन्होंने भी निकाला था but इसके shades काफ़ी different हैं and this is the original palette. However, the packaging is meant to be same. They've kept the packaging same and they've copied it from Sephora. This is the shade that this palette has and we are going to pick this shade, and this shade is Peacock. So we are using this shade today. I am using a flat shader brush and मेरा जो concealer है वो almost सूख ही गया है. So guys, I am picking this shade and with the help of a mirror because it helps me do things with precision. I am going to alright guys, वो fill करने के बाद मैं ये blue liner से wing बना के now I'm going to use this liner and एक प्रॉपर शेप इसको देके मैं ये पूरा सा फिल करने वाली हूँ. गाइस, मैंने अपने लाइनर को अप्लाई कर लिया. ये थोड़ा सा गीला है अभी. व्हेन दिस विल ड्राई अप वी विल डू द नेक्स्ट स्टेप एंड कंप्लीट दिस लुक. ऑलराइट गाइस, तो ये सूख चुका है. अब मैं ये सिल्वर ग्लिटर जो है ये यूज़ कर रही हूँ एंड इस तरीके से आई एम फिलिंग दिस
don't have to run the brush outside the boundary. Be very careful of it. And ये थोड़े से चंकी ग्लिटर है, so इसको सिर्फ प्रेस करके ही you have to stick on. Sorry for this, I will be cleaning it up once we do the face makeup. So right guys, see मैंने अच्छे से दोनों आई शैडोज़ ब्लेंड करके अच्छे से आई शैडोज़ पे पिगमेंट लगा के, लाइनर लगा के, लैशेस लगा ली हैं. एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद द लुक नाउ. So guys, this is the Beauty Glazed palette that I am using for my lower lash line now. And मेरे पास ये dark green color का liner है. So मैं इससे अपनी lower lash line पहले fill कर लेती हूँ, so that it doesn't look void. Fine guys. इसको और ब्यूटिफाई करने के लिए इस लुक को गाइस मैं ये पेंसिल ब्रश उठा रही हूँ. एंड आई एम यूजिंग दिस नेवी ब्लू शेड, और प्रॉबली वी कैन यूज़ दिस इंडिगो शेड राइट हियर. मैं ये इंडिगो शेड यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ ये बहुत ही खिल के आएगा हमारी लोअर लैश लाइन पे और अच्छे से दिखेगा भी, विजिबल भी होगा. Because guys, ये peacock look है and it was a surprise. I did not introduce it to you guys in the beginning. And इसको हम आगे तक ले जाएंगे इस तरीके से. And similarly the other side. Alright guys, so as you can see I am done with the lenses and the lashes and everything, and now guys it's time for the face. So guys, there is a lot of fallout because of the sparkle and everything, so I am going to use this particular wet tissue and wipe my face off, and we're going to do the rest of the face now. Alright guys, priming हो गया मेरे face का, and मैं ये natural buff जो है shade number 230 from Fit Me मैं ये यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, और बैक ऑफ माई हैंड जितना मुझे लगता है मुझे लगेगा उतना ही I'm taking it out. Now guys, I am applying it in a dotted way, and so guys, for this you can use a brush. Okay, Sephora palette मैं उठा रही हूँ guys, and I'm using this marine shade, and मैं अपने eyebrow bone जो है अब उसको थोड़ा सा इससे enhance कर रही हूँ guys. Okay, and similarly दिस साइड, इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. यही ब्रश यूज़ करके मैं अपने इनर कॉर्नर भी फिल कर रही हूँ. Alright, and guys, time for eyebrows and the lipstick at the cheek part. Alright guys, मैं ये palette यूज़ कर रही हूँ from Sephora. This is the face palette, ultimate face palette I believe, and इसमें ये सारी चीज़ें हैं, contour, blush, bronzer, everything. Okay, so guys, I am taking this and alright, and I'll take another brush for the contour and bronzer. I'm using the bronzing shade itself, which is bronzer है, मैं ये use कर रही हूँ. Alright, and now time for the highlighter.
हाइलाइटिंग के लिए मैं ये मैक की किट यूज़ कर रही हूँ गाइस. इट हैज़ अ लॉट ऑफ शेड्स. मैं यहाँ जो वाइट सा शेड है मैं यही उठा रही हूँ. ब्यूटीफुल. गाइस कुछ प्रोडक्ट्स मैंने कफ्स एंड लैशेस से ख़रीदे हैं. कुछ प्रोडक्ट्स आई परचेज्ड फ्रॉम सेफोरा and certainly from MAC itself. So guys, this completes today's look, and this is beautiful peacock look that I have come up with, and this is my beautiful peacock look challenge for you guys. And let's run this challenge guys, and let's hope everyone brings out beautiful colors and beautiful creativity of their own. And for the next videos, keep on watching Flamboyance by Amy. I will be linking down my Instagram handle, my YouTube handle, and my Facebook page handle in the video link downstairs. Just let me know if you find this video interesting. If you want to know what products I've been using for this video, just go to the description box. I will mention each and everything. And let me know how you particularly like this video. क्या अच्छा लगा आप लोगों को, क्या you wanted to learn, और आप लोगों ने क्या नया सीखा इस वीडियो से. That will be of great help to me and to the channel itself. And till then, see you. Good night. Bye.